Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss an important topic, that is importance of carbon. So let's move to the whiteboard. So dear students, importance of carbon. सो आपने केमिस्ट्री में भी काफ़ी पढ़ा होगा कार्बन के हवाले से। आज हम बायोलॉजिकली इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन is the basic element of organic molecules or organic compounds. Clear? It's a basic element. हमने दो तरह के जो है वो कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक डियर स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, होपफुली क्लियर होंगे। मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दे आर प्रेजेंट एट अ टाइम। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज organic, and all other compounds other than the carbon hydrogen जिसमें नहीं है वो सब कहलाते हैं inorganic। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो डियर स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? सो दैट इज इनऑर्गेनिक बिकॉज कार्बन तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल और एक ही केमिकल कंपाउंड में होना जरूरी है टू बी ऑर्गेनिक। क्लियर? अगर नहीं है तो वो सब के सब क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। इसी तरह से वाटर, अब यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है लेकिन साथ में कार्बन नहीं है, सो वाटर इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक। ठीक है? सो दीज आर इनऑर्गेनिक। It was just to revise your concepts. So carbon is the basic element of organic molecules. Due to its complexity, it is the major contributor in the skeleton of life. जिंदगी में जो जिंदगी का ढांचा है वो सारा का सारा इसके ऊपर बेस कर रहा है। हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनिक है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज ऑर्गेनिक। हमें आसपास जो चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है? तो इसमें कार्बन दैट इज द मेजर एलिमेंट, द बेसिक एलिमेंट। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम फीचर्स of carbon, some important features like the carbon is tetravalent. Tetravalent केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स? Its outermost shell has got 4 electrons, so that is why it is called as tetravalent. इसके outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, इसी वजह से it also belongs to group 4A of the periodic table. Clear?
इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब इसके पास चूंकि 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को या एटम को स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? तो इसमें आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, दे फॉलो आइदर द डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। तो स्टेबलाइज होने के लिए या तो उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा या फिर डुप्लेट। और डुप्लेट रूल वो तो पहले 2 एलिमेंट्स पे फॉलो होता है, हाइड्रोजन और हीलियम पे, उसके बाद तमाम के ऊपर ऑक्टेट रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो तब ये कंपाउंड जो है या जो एलिमेंट जो है ये स्टेबलाइज रह सकेगा। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म 4 डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है, 4 डिफरेंट, it has the ability to combine with 4 different elements or 4 different atoms, ठीक है। और radicals, तो ये 4 और एटम्स के साथ बाइंड कर सकता है, उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। सो दीज आर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं एटम्स को शो कर रहा हूँ, ये बड़े सर्कल्स में, इसके साथ ये बाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वजह से ये टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ये बहुत ही यूनिक किस्म का अल्लाह ताला ने ये जो है एलिमेंट है वो बनाया। द कार्बन एटम combines chemically with 4 atoms, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, और radicals, giving rise to stable tetrahedron shape। जब भी इसके चारों बॉन्ड्स जो एटम्स जो है वो उसके साथ एक जैसे जुड़ जाएंगे, तो ये कौन सी शेप अटेन करेगा? टेट्राहेड्रन, 4 कोनों वाली, लाइक दिस। सो दिस इज कार्बन, so this is how it forms a tetrahedron shape, 4 कोने, 1 2 3 4। Clear? Like this. So this is a tetrahedron. तो जब भी ये 4 एटम्स के साथ या रेडिकल्स के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये टेट्राहेड्रन शेप अख्तियार कर सकता है। It also has the ability to form open structures, ring structures, or branched and unbranched structures। सो ये काफ़ी बेहतरीन किस्म की क्वालिटी, यूनिक किस्म की क्वालिटी जो कि सिर्फ इस एटम को अल्लाह ताला ने दी। लाइक हियर इज एन एग्जांपल, so this is the unbranched structure formed by the carbon। So this is 1 2 3 4 5 6, this is n-hexane। n-hexane, 6 कार्बन एटम्स हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं,
और अल्केन है ये, और लीनियर स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। इसी तरह से इट ऑल्सो फॉर्म्स ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, so this is the branch structure. Clear? So this is basically 2,2 dimethyl propane, या इसको हम आइसोपेंटेन भी कह सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोपेंटेन. So that is a branch structure. Clear? तो ये भी एबिलिटी अल्लाह ताला ने कार्बन को दी. इसी तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, as you have seen in the benzene. So this is the ring structure. This is the structure of benzene, C6H6. Clear? So that is the variety which Allah has given to this carbon. So it's a unique property. Like this, carbon can form covalent bonds with hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, sulfur, etc. etc. Clear? और dear students, मुख्तलिफ तरह के ये बॉन्ड बना सकते हैं. बॉन्ड कौन कौन से बन सकते हैं? Number 1 is carbon hydrogen bond. So these are the bonds formed by the carbon. Number 1, carbon hydrogen bond. So this is the covalent bond formed between carbon and hydrogen, and it is the potential source of energy. It stores energy during formation and releases energy while breakdown. So this is the potential source of energy, dear friends. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी कंपाउंड्स के अंदर होगा, तो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है. जब ये बॉन्ड बनता है तो तब एनर्जी इस्तेमाल होती है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी. इसी तरह से कार्बन, it forms the bond with oxygen, carbon oxygen bond, that is called as the glycosidic bond or linkage. Inshallah, we will discuss in detail in the portion of carbohydrates. So that is the bond formed between two monosaccharides.
क्लियर? यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में चल के पढ़ेंगे, उनमें मोनोसेक्राइड्स, दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के जरिए वो लिंक होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज CO बॉन्ड और द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? इसी तरह से द कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स द बॉन्ड विद नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, or it is also called as the peptide bond or peptide linkage. Clear? So it is a bond, the covalent bond formed between two amino acids. The bond formed between the two amino acids is called as the peptide bond, and it is present between the carbon and nitrogen. Inshallah, in the portion of proteins, we will discuss it in detail. The peptide bond. In carbohydrate portion, we will discuss the glycosidic bond. These are important regarding short questions. इसी तरह से, dear students, the carbon forms molecules. The molecules formed by carbon. तो दो तरह के molecules, dear students, बनते हैं. The micromolecules and the macromolecules. Clear? ये दो तरह के. So micromolecules किसे कहते हैं, dear students? आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था. The molecules having low molecular weight are called micromolecules, while the molecules having high molecular weight are called the macromolecules. Clear? So the micromolecules, they are soluble in water, while the macromolecules, they are insoluble in water. Clear? इसी तरह से dear students, जब ये soluble है water में, so they act as a source of energy. Means when they are hydrolyzed or when they are oxidized, they provide energy. While the micromolecules, being insoluble, they store energy by joining micromolecules. माइक्रोमोलिक्यूल्स को जोड़कर आपस में, तो ये क्या करेंगे, ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं. एंड अपॉन रिक्वायरमेंट they are and they provide us with energy. Clear? They provide us with energy. While the macromolecules, they act as building units or blocks for macromolecules, while the micromolecules join
to form macromolecules. Clear? और इसी तरह से dear students, इनकी examples, its examples are like glucose, amino acids, fatty acids, cholesterol. So these are the micromolecules, while the example for macromolecules is starch, proteins, lipids, DNA, that stands for deoxyribonucleic acid, and RNA. So these are the examples of macromolecules. और dear students, याद रखिएगा ये जो examples macromolecules की मैंने आपको दी हैं, इनमें सबसे complex और lengthy और सबसे बड़ा जो macromolecule है, that is DNA. Inshallah, in second year, in chapter number 20, that is chromosomes and DNA, वहाँ पर आप इसकी details पढ़ेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि DNA के अंदर इतनी information भी हो सकती है which we can just imagine, and sometimes we cannot just imagine a type of information and the quantity of information which is stored in a single DNA. Clear? So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.